HRs don't have a direct role in layoffs. How is an HR responsible party to the layoffs that are currently going on? You should be careful in laying off that person. आपके पास अगर फाइनेंसेस नहीं है आज के डेट में, या अगर आपको लग रहा है कि मेरा ऑफिस इतना बड़ा मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, या whatever the reasons be. Hello everyone, welcome to the show. I'm Hazel Vakharia, working as an HR consultant and upskiller. Today we have here with us Coach Sakshi. She's a business coach for solo entrepreneurs, and we are fortunate enough to have her in this show because she has prior experience working as an HR professional. So she'll be discussing a lot of different aspects on current happenings in the HR field as well as to the business dynamics as well. So welcome Sakshi to the show. Thank you so much for the warm welcome, Hazel. Thank you for this opportunity. Okay, so we'll start with something that is really trending in the market these days. That is the layoffs. So we'd like to know from you, as an HR professional who has been associated with corporate in the past, how is an HR responsible party to the layoffs that are currently going on? Okay, now you're hitting you're hitting the rock hard. So if we consider layoffs and if we consider the role of HRs, unfortunately speaking, HRs don't have a direct role in layoffs. रीज़न बीइंग कि जब हम किसी भी ले ऑफ की बात करते हैं या हम ये बोलते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी से निकालना पड़ा, वो डिसीजन मैनेजमेंट की तरफ से आता है rather than coming from the HR. Okay, so if you consider HR, they are not responsible for those layoffs, but yes, if an HR and a financial team works together to keep the right people in the organization to save the organizational culture, I think that strategy is missing in today's organization, especially the startups. Okay, so the bad reality of startups is कि startups के पास funds हैं, and when you get funds, you get bewildered, you get overwhelmed कि अब मेरे पास funds हैं, I have to do marketing, I have to put my product right, I have to reach out the market on a larger scale, because of which you want more employees in your teams, right? And you go into your HR and you say कि हायरिंग करनी है, और जब आपको पता है कि हायरिंग करनी है, आपने हायरिंग करी, एंड देन आफ्टर दैट जब ये एक फेज चला जाता है और जब एक सेटलिंग फेज आ जाता है फॉर यू, यू रियलाइज एज अ कंपनी, द मैनेजमेंट रियलाइजेस कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्स्ट्रा है, राइट? नाउ वेयर द कंपनीज फेल टुडे इज टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा हैं, एंड नॉर्मली ये लोग या तो सैलरी के टर्म्स पे निकाले जाते हैं या तो फिर उनका एक स्ट्रैटेजिक मूव होता है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमें सिर्फ इतने ही लोग रखने हैं. Whereas how an HR can be an effective person to do effective layoffs can be to remove those persons who are not fitting right as per the work ethics, the culture and the need of the business, right? अगर वो एक पर्टिकुलर इंसान आपके बिजनेस में एक नीड पूरी कर रहा है, एक कल्चर को मेंटेन करके चल रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ही जेल्ड अप है, तो यू शुड बी केयरफुल इन लेइंग ऑफ दैट पर्सन. सो लेइंग ऑफ शुड नॉट बी अ सोल्यूशन. जिस चीज को आज लोगों ने सोल्यूशन की तरह देखना स्टार्ट कर दिया है कि ले ऑफ एक इजी सोल्यूशन है कि आपके पास अगर फाइनेंसेस नहीं है आज के डेट में, या अगर आपको लग रहा है कि मेरा ऑफिस इतना बड़ा मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, या whatever the reasons be, ultimately you decide to lay off. But layoff is not a solution. Layoff should be the last solution for any company. Unfortunately, that's not happening today. And the thing is कि layoffs अभी नई चीज नहीं है. Many people don't know this. In 1960s in America, there was a company, electronics company called GE. Okay, वहाँ पे उनके जो founder थे, and he took a decision. He used to lay off his employees every year by 10%. वो अपने 10% employees को हटा देता था हर साल. Okay, this was done at an era where job security was, every company assured you a job security, right? आज के डेट में you can't speak about job security with all the current things that are happening, but उस टाइम पे job security was a major thing. तो भी वो lay off करते थे, and उनके पास सिर्फ एक simple reason था कि I will not let anyone stay who is not fitting in my organization. Okay, so the reason was very solid why he used to remove those 10% people. Today the reasons are biased.
समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द कंपनी अपराइट, नहीं तो कंपनी कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. समटाइम्स it is the change of management that suddenly happens, or the investors entering, and then there's a lot of things happening that normally a normal person or a normal employee doesn't knows that what happens in the management level, right? So without any offense to whatever is happening, I would just say that a role as an HR should be to be very functional in your area and to give the best, to keep the best people. मतलब एज अ HR अगर आप अपने ऑफिस में अगर बेस्ट लोगों के लिए फाइट आउट कर सकते हो, आई थिंक यू आर डूइंग द बेस्ट जॉब एज एन HR, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टैप इन टू पीपल्स इमोशंस. अगर आप वो कर सकते हो तो आई थिंक यू आर द बेस्ट HR, एंड एनी कंपनी वुड लव टू हैव यू एट एनी कॉस्ट इफ यू आर एबल टू मैनेज देयर एम्प्लॉयज नाइसली. ओके, सो दैट्स फ्रॉम माई साइड. Okay, so you talked about how the earlier owner of that company used to lay off because they were not fitting right into the company, according to him. Right. So, what do you think would be the best practices to maintain that good culture in an organization by an HR? Okay, so as we were speaking about a good culture right now, and हम लोगों ने ये बोला कि एक HR जो है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कल्चर को बनाए रखना, राइट? एंड इस टाइम पे क्या होता है जब ऐसे डिसीजंस हो रहे हैं कंपनी में, जैसे कि सैलरी कट डाउन्स फॉर एग्जांपल, ओके, बोनस जो मिलता था वो नहीं मिलना, राइट? या आपके हॉलीडेज पे कुछ इफेक्ट आना, या जो बेनिफिट्स थे, जो पर्क्स थे वो बंद हो जाना, ले ऑफ्स होना, जब ऐसे डिसीजंस होते हैं ना तो कितना भी अच्छा कल्चर हो हिल जाता है. Right? Why? Right. Because not only Indians, but I also believe that in other countries as well, people have a tendency to talk. Where will people go? They will talk to each other, right? And that happens in an organization, in any of the organization, whether it be national, international. So the point now is कि अगर आपके पास एक कल्चर था जिसको आप मेंटेन करके चल रहे थे, and वो अगर डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, तो ये जो चीजें होती है ये सडन नहीं होनी चाहिए. जैसे सडन ले ऑफ्स, सडन कट, बोनस कट, ओके, सडन इंक्रीमेंट्स में से कट, ये सब सडनली नहीं होना चाहिए. एंड देयर शुड बी अ जस्टिफिकेशन एज टू व्हाई दिस इज हैपनिंग. ओके, नॉर्मली आई हैव सीन दैट प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में हम शायद इतने आगे भाग गए हैं कि हम ह्यूमन एथोस और वैल्यूज को कहीं पीछे छोड़ गए, राइट? एज एन ओनर, लाइक यू नो, व्हाई रतन टाटा इज द रतन टाटा, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. राइट, व्हेन यू नो देयर इज अ टेररिस्ट अटैक इन मुंबई, वहाँ का जो स्टाफ था जिन्होंने उस टाइम पे ये ध्यान दिया था कि जितने सारे गेस्ट वहाँ पे हैं, ना ही उनको बाहर निकालना है सेफली, बट उनको फूड और पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर वाज हैपनिंग इनसाइड दैट होटल. अगर वो स्टाफ इतने डेडिकेटेड थे तो वो एक वजह थी उसके पीछे, क्योंकि जो पर्सन है जो कि उन चीजों को मैनेज कर रहा है, या जो कल्चर है वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एक वेंचर का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज यू हैव द पीपल. And somewhere Ratan Tata has also told this in one of his interviews, that when he recruits people in hospitality, they see to it that they come from a lower background. Right, right. He has talked about this in one of his interviews, okay, that they have a structure when they recruit, कि हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से या लो बैकग्राउंड से आते हैं. Why? Because they understand, उनके लिए इमोशंस, केयर, ये सब प्रायोरिटी पे हैं. So whatever ethics you are taught in the hospitality industry, but ultimately your emotions, your heart and soul speaks a lot. And then he did for those employees. He paid them back, right? So there was a dinner specially organized and people were called out, and it was hosted for those employees who served those guests. So there were a lot of things done. तो अगर आप एक ओनर के जैसे अगर आप एक बिहेव करते हो इस तरीके से कि जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें अगर आपका एम्प्लॉइज अगर आपका साथ दे रहे हैं तो आपको भी उनका उतना ही साथ. एंड द सेम वे इट हैपेंस हियर एज वेल. एंड यहाँ पे HR का एक क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि अगर कुछ भी ग्राउंड लेवल पे हो रहा है तो यू हैव टू टेक इट ऑन the management. You have to take it to the management, and you have to speak that to the management, and you have to convey it in such a way, and you have to go with solutions. The problem here with people is कि हम problems के साथ जाते हैं. Right. यू नो, स्ट्राइक हो रही है, हम चले गए प्रॉब्लम्स के साथ. सर फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, ओके, अगेन लोगों का एक परसेप्शन होता है कि चले गए, सर लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, राइट? ओके, एम्प्लॉयज हमारे बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? डोंट गो विथ प्रॉब्लम्स. इफ यू हैव टू बी अ गुड HR, गो विथ सोल्यूशंस. टॉक अबाउट सोल्यूशंस. कि सोल्यूशंस क्या है यार? मतलब अगर हमारे बारे में कोई बात कर रहा है तो क्यों बात कर रहा है? उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, वो प्रॉब्लम आप लेके जाइए मैनेजमेंट के पास,
you need to tell the management कि ये problem है, जो ऊपर से दिख रही है वो problem नहीं है, this is the root problem, so you need to address it personally. And if the management fails, then I am sorry but HR is also not responsible, right? So HR से ज़्यादा management का role play करता है, but हाँ HR is a function, और HR कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलें तो वो एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन का, उसका काम ही है इन्फॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाना. इट मे बी टॉप द फनल और डाउन द फनल, राइट? सो दैट्स हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड इन टुडेज सिचुएशन. Right. Okay. So HR is like a very dynamic field. A lot of freshers are, opting for human resources as a career. So what would you advise to those young freshers starting out there? Like what do they have to keep in mind when they are looking out for a job? Yes, the HR field is very dynamic. Every field is very dynamic today. Specifically, आज technology, AI, these are the certain things that are being used in such a way. ये normal है. Like you have to keep learning. You can't be stagnant. Okay. So there is a difference. You will find some people working at 30,000, 50,000. और अगर आप उनसे 10 साल बाद भी जाके बात करोगे ना, 50 से 60 पे आए होंगे, 65 पे आए होंगे. Right? Okay. Why? There is a lack of perspective for self growth. Okay? तो जितनी ही फील्ड डायनामिक है उतना ही हमें भी डायनामिक होना पड़ेगा टुवर्ड्स आवर लर्निंग्स, राइट? फील्ड डायनामिक क्यों है? बिकॉज आज हर एक फंक्शन में, हर एक बिजनेस फंक्शन में इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी, right? There's automation, there are systems, there's AI today that we talk about in every business and every function. So how that particular technology can be tapped in the best possible way in the business is something that you need to learn, right? I would like to share my experience here. Like I have been into HR for 5 years, right? And when I was associated with a company, it was a very good education brand, but unfortunately everything was on paper or Excel sheets. Like even after being a 25-year-old company, it was in that format, and which was like okay because technology was growing at a slow pace, but still being a 25-year-old company, I think somewhere they were lacking in tech. And technology जब hit हुई वहाँ पे तो they said कि सब कुछ system में लाना पड़ेगा, right? Now for that you need people who are able to put everything on the system, balance both your physical system as well as digital system, let the employees know कि ऐसा system आ रहा है and this is for their good, okay? And the employees should not feel burdened about it. So this is how your role comes in, and that's how you have to be dynamic, right? Because if you don't change, how will you expect others to change? So the first thing is you have to accept that change. अगर आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपके यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो रहा है of anything, of any of the functions, the HR functions, first you have to accept that change, and for that acceptance you should have a valid reason कि क्यों हो रहा है. Okay, that's it. The brand that I worked with, there was a very valid reason. Why? Because they were growing. There was a merger happening with another big brand, and they were growing in numbers. So the number of centers were growing. The data had to be central for all the I would say center managed schools. Okay, they used to call it COCO model. Okay, company owned service models. So that time it was the need, because अगर आपके पास आज 7 centers है जो कि company owned है within a particular city, and then after that अगर वो 7 centers अगर 10 centers में change हो जाते हैं अगले 3 years में, तो how do you manage that? So it needs to come down to center. How much salary is going where? How much people are allocated where? What is the I would say the human capital required, right, in a particular organization? Because a school, education institution, it runs on human capital, right? बिना humans के वो venture तो work ही नहीं कर सकता. So there are 300 people, 500 people employed in a particular organization. So it needs to be tracked. So there is a viable reason why people shifted to system. Now, if you start explaining this reason to people, for them it will be like इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, right? Okay, so as an HR now you have to turn this around in terms of कि लोगों का इसमें क्या फायदा है इसमें. then you will have to find the employee benefit. employee क्या benefit होते हैं employee systems के? there are many benefits, like you get to apply leaves properly, you have a system where you know कितनी leave गई, attendance एक थोड़ी automated हो जाती है. there are many things like policies automate हो जाती है. वो depend करता है कोई भी organization किस level पे HR system को चला रहा है. you also start receiving trainings online, which is good for your personal growth if you take it in a very positive way. unfortunately corporates में training को ऐसा देखा जाता है कि जबरदस्ती जाके बिठा
दिया, बट इफ यू आर अ लर्नर then you will definitely love that particular format. So for that, for anything like in business we say कि अगर हमें business में कुछ चीज़ sell करनी है तो सबसे पहले खुद को sell करनी चाहिए. So if you are able to sell it to yourself, you can sell it to others. The same way I would say for an HR, if you are able to put a logic for yourself and explain it to yourself why you are doing this, then it will be easy for you to explain it to other people as well. And then whatever be the dynamic situation, you will be able to cater to it because you know कि क्या dynamics है हमारी organization के and how the system is changing, because of which the culture will also change. Okay, बहुत सारे changes आते हैं, जैसे tech भी अगर हम include करते हैं तो उसके हिसाब से भी culture change होने लग जाता है. Like you know, there are some people who will like it, there are some people who will struggle with it, specifically if we consider because of age gaps within our staff, right? So बहुत सारे pros and cons होते हैं एक particular चीज़ के, and उसको आप जितने rightly put up कर सको, I think that's your job as a HR. Okay, so talking about changing the system and bringing in tech, so other than the formal education, what is the skill development part that freshers or even experienced professional need to imbibe nowadays? Okay, so the point is कि हमारी जो Indian education system है, that believes कि अगर आपने MBA कर लिया या अगर आपने कोई भी एक functional चीज़ को सीख लिया है in terms of education, in terms of theoretical knowledge, then you are eligible to go apply and get the best of the jobs in the world, right? But unfortunately, if you have seen people who get selected in the topmost companies of the world, these are the people who have specific soft skills catering to their job. Okay, so one thing that is very important is to have a balance of technical skills as well as your soft skills. जितना आप टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान दे रहे हो उतना ही आप सॉफ्ट स्किल्स भी सीखिए. हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटर, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन. लाइक एक कंपनी में कितने HR होते हैं, राइट? 1, 2, 3 है ना, मैक्सिमम कोई एक बड़ी MNC होगी तो 4 या 5 का डिपार्टमेंट होगा, राइट? सो HRs आर वेरी लिमिटेड kind of people and they have tons of responsibility. Okay, why? Because you will be seeing the salary, you will be listening to complaints, you will seeing the leave records, which is like a daily attendance record, just like a school teacher. Okay, ki like you know, I mean it becomes worst. I mean earlier it was the same way. रोज एक रजिस्टर रखा होता था, लोग वहाँ आकर के एंट्री मारते थे. क्या था वो? मतलब स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर ही तो था, और क्या था? So the point is कि अगर आपको स्किल्स सीखनी है एज अ पर्सन एंड इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न पीपल स्किल्स. So there must be some part where you learn soft skills and there must be some part in your life where you also start learning people skills कि मुझे लोगों को कैसे handle करना है. Okay, because when it comes to salary, okay, negotiation is important. Right? You can't put your company on a stake saying कि ये बंदा इससे कम salary में नहीं. I mean, it's a give and take, right? Okay, how to put the offers right, how to put the benefits right to people, how to talk to them, how to solve queries. Okay, so these are little bit of small things that normally people avoid in an organization. But if you, as an HR, if you bring this to an organization, I think you are doing a great job. क्योंकि system तो कोई भी संभाल सकता है आज की डेट में. Like you know, जब data आपके system में आ रहा है, salary आपके सिस्टम में फिट हो जाती है, आपको पता है किसको कितनी जानी है, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स. कोई भी पढ़ा लिखा इंसान उस सिस्टम को रन कर सकता है. बट पीपल को मैनेज करना, लोगों को संभालना विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल. सो आई बिलीव कि उस चीज़ पे थोड़ा फोकस शायद होना चाहिए नई जनरेशन का, बिकॉज टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतनी ही कहीं ना कहीं वियर्ड भी है. जैसे वी हैव सीन कि लाइक यू नो पीपल हैव पुट अप वीडियोज ऑफ मैनेजर्स नॉट बिहेविंग वेल इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर वी हैव सीन दोज वीडियोज गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया, राइट? वेदर it be a Zoom call, whether it be a physical office, we have seen those examples. I don't need to tell the names. It's well known. So जब ऐसी चीज़ें होती हैं and if you are a young person in the organization, your job is to settle these things out. Whether you be responsible for anything, but ultimately आपकी वजह से वो चीज़ बढ़नी नहीं चाहिए.
राइट, एंड यू शुड बी एबल टू टेल दिस टू द मैनेजमेंट एज वेल, लाइक यू नो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा हैंडल हो सकती हैं, एचआर के द्वारा हैंडल हो सकती है। प्रॉब्लम है इसकी एचआर न्यूट्रल रहते हैं कभी कभी, एंड स्पेसिफिकली लाइक कभी कभी हमारे जो एचआर मैनेजर्स होते हैं वो भी थोड़े न्यूट्रल हो जाते हैं सिस्टम के साथ साथ कि अरे जाने दो, 2-3 दिन शोर होता है, चौथे दिन सब काम पे आ जाते हैं। ओके तो वो मैनेजर्स तक भी उस चीज़ को सेंसिटिवली लेकर के जाना इज एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। Okay, so this thing even I learned when I was in job. I used to audit different centers when I was in HR job, and fortunately I got this chance to learn a lot of these elements, because whenever I used to visit centers, so I used to see a gap between the head office and the center. Okay, because although there was a HR in between, so एक HR है बीच में, बट स्टिल वो फ्लो प्रॉपर नहीं है। सो आई वॉज सेंट देयर कि जाओ एंड वहाँ पे देखो कि मतलब लाइक यू नो क्या चल रहा है। तो आई यूज टू डू सम सीक्रेट ऑडिट sometimes I used to go talk to staff and all those things. So when these things happen, actually we saw that you know people started believing like you know कि अच्छा वो head office से भी हमारे पास कोई सुनने के लिए आता है। So these kind of systems actually help you, and I was fortunate enough, the organization was very good, it had a very good culture to work with. So even I as an HR learned a lot. So be with an organization where you can learn a lot and keep learning from time to time. Okay, so now that we talked about freshers, there are a lot of HR professionals who have been in the field for 5-7 years. Maybe they want to switch out to a new opportunity. It can be freelancing or starting something of their own. So how would you as a business coach bring out the idea of starting a new venture in HR? Okay, so this takes me back to the year 2019. I started my very first venture into recruitment. And thinking that like you know कि ये तो मुझे आता है, like you know I've been recruiting candidates in my company and I was like ये skill तो मुझे आता है। तो when you know a particular skill, you sometimes think कि मुझसे वो business चल जाएगा। Like you know I can be a freelance recruiter, I can start as a freelance recruiter and I'll give references to people and people will give me the contract and all that stuff. Okay, fortunately or unfortunately that venture of mine failed, and when it failed it opened my eyes, because I could understood कि यार मतलब जो भी है मुझे एटलीस्ट उसके business dynamics तो नहीं पता है। Okay, so for anyone who's learning a degree as an HR, taking a degree as an HR or learning some courses as an HR, I would say that although you might be learning a lot, but the first thing to do is go and take practical experience from somewhere. And even I had practical experience, but then too I failed. So there was a reason, because I didn't understand the business dynamics. कि एक बिजनेस की क्या निटिग्रिटीज होती है, एक बिजनेस कैसे रन करता है, अगर फ्रीलांसिंग भी करना है तो वो कैसे करना है ये मुझे बताने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था। Because of which the whole thing collapsed. Like you know I could make a considerable amount of money in the first 2 months, but then later धीरे धीरे वो नीचे ही जाता गया, and ultimately I said मुझे ही मजा नहीं आ रहा। Like you know I started to stress out because I thought that I'm losing out on a lot of things and somewhere my potential was also not meeting up. So एक ये चीज़ भी होती है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, बट द पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड कि ये पूरा इंडस्ट्री वर्क कैसे करता है। सो टॉक टू समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग दैट सो दैट यू गेट दैट आइडिया कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। ऑल्सो आई वुड से टॉक टू पीपल अबाउट टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, गो वर्क अंडर सम कंसल्टिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंसल्टिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो पहले 3, 4, 5 months I would say work under a consulting structure so that you understand. Side by side start building your own freelancing setup and convert it into a business model. So there are 3 stages actually. Number 1 is learning. So when you learn theory and practically, right? So theory के साथ आप जितना भी theory पढ़ लो, कहीं से भी theory पढ़ लो, but ultimately go and practice it out somewhere. अगर आप freelancing में ही कर रहे हो तो then join a consulting, you will get a practice, क्योंकि उन लोगों के normally video calls होते हैं for the freelance recruiters and they try to bring you in their own culture or their own ways of doing recruitment. तो वो एक चीज़ होती है, तो they train you, they tell you a lot of things, plus you understand how this whole consulting structure actually
वर्क्स, राइट? तो ये कंसल्टिंग स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मनी कहाँ से आएगा और कहाँ फ्लो आउट होगा। एक ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, दूसरा पीपल एस्पेक्ट कि अगर आप पीपल ला रहे हो तो उसका सोर्सिंग ऑप्शन आपके पास क्या है, एंड थर्ड इज क्लाइंट एस्पेक्ट डेफिनेटली कि आपके पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे। ये तो 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के जो स्टडी करने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बताने वाला कोई नहीं था, एंड दैट इज वाई द होल थिंग कोलैप्स्ड। एंड क्या होता है जब कोई एक चीज़ कोलैप्स होती है ना, तो बहुत जल्दी हम फिजिट होकर के दूसरा चीज़ चालू कर लेते हैं, लाइक यू नो वी डोंट थिंक कि ये चीज़ कोलैप्स क्यों हुई, राइट? तो मेरे साथ मेरे 2 मॉडल कोलैप्स हुए, अलग अलग बिजनेस मॉडल, एंड इन द थर्ड मॉडल इट हिट मी हार्ड व्हेन आई सेड कि यार 2 मॉडल कोलैप्स हो गए, ऐसी कौन सी गलती थी कि दोनों मॉडल्स कोलैप्स हो गए, राइट? ओके, सो देन in the third model fortunately I got my mentors where I could understand कि business के भी कुछ dynamics होते हैं which you need to understand so that you can build a better business, right? So whether it be a freelancing turned business model, anything that you want to do, learn, apply, and keep on doing it till the time you are able to achieve what you want. Identify the right sources, the right mentors who can actually help you or be with you in these circumstances. Never stand alone. अकेली जर्नी बहुत बहुत लोनली होती है, बिकॉज व्हेन इट हिट्स हार्ड, जिस मंथ में आप प्रॉफिट नहीं बनाते हो ना, आपको पता होता है अंदर से आपकी हालत क्या होती है। सो यू नीड समवन हु स्टैंड्स बाय यू, एंड जिसको आप एक बार भी अगर बोलो ना कि मेरा इस मंथ प्रॉफिट नहीं बना, स्टिल दैट पर्सन विल स्टैंड विथ यू एंड से इसको ऐसा नहीं ऐसा कर, नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट बनेगा। That's what is the role of being around mentors, being around people who can actually help you and guide you. So I would say these practices can definitely help anyone to build up something in HR of their own. Thank you, Sakshi. Thank you so much. I'm sure all the people who are listening out to us, whether they be freshers or even if they're experienced, must have learned quite a lot from you. So thank you. Thank you, Hazel, for inviting me. And yes, definitely, there is a lot of things that needs to be worked in human resource domain. And I hope the listeners of this podcast have got a crucial message that whatever you are doing, apart from the technicalities, work on the human side, because that's what your department is, right? Human resource. So worry about that human resource, be more emotional, talk about the emotional side, and fix the technical sides as well. And I wish each and everyone all the best for your journeys ahead. Thank you.